Good morning, students. See, in the last class, we talked about the pressure exerted by the liquid, and we have found that liquid exerts pressure in all the directions. We had also noticed that as we go downward, pressure increases. This is the field of any liquid. This liquid exerts pressure in all directions, here, and have you noticed for this side, we had taken a plastic ball, we had put it down with the force of our muscles. And when we remove our muscles, we found that this ball has come again on the top, which means that this liquid is exerting pressure on it, on the topward direction. So liquid exerts pressure in all directions, and the pressure increases when we move downward. Now today we will read pressure exerted by the gas. In the same way as the liquid does, gas also exerts pressure in all directions, okay, as we go upward, air pressure decrease. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, force, it means mass, weight, that will come little bit less, and the pressure will decrease. So we will read about the atmospheric pressure. What is actually atmospheric pressure? Atmospheric pressure. How can we define the pressure? You can define it as the pressure exerted by the atmosphere due to its weight is known as atmospheric pressure. Yes, the pressure exerted by the atmosphere due to its weight is known as atmospheric pressure. Do you all know atmosphere? What is atmosphere? The blanket of air that has covered the surface of the earth, that is known as atmosphere. Just because this is made up of air, no doubt it will exert pressure. Yes, and this pressure is known as atmospheric pressure. It is measured with the help of barometer. Actually, barometer is a device that is used to measure the atmospheric pressure, and the unit is millimeter of mercury. Mercury is the liquid which is used in the atmospheric pressure, and no doubt it is pressure, but its SI unit is not Pascal here. We used to measure it with the help of barometer
there is the filling of mercury. So with the help of this mercury, there will be scale. We used to calculate atmospheric pressure, and that's why the unit is millimeter of mercury. Next thing, atmospheric pressure at sea level is 760 millimeter of mercury, and when we move upward, maybe on mountain, जैसे हम ऊपर जाते हैं माउंटेन पर, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेट, डिक्रीजेस. फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है. वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा. फोर्स डिक्रीज होगा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा. इट मींस whenever we will go on the mountain, atmospheric pressure will decrease. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, प्रेशर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. And that's why mountaineers, those people who used to climb on the mountains, they are known as mountaineers. They used to carry oxygen cylinder. Yes, they used to carry oxygen cylinders just because they knew that there will be less atmospheric pressure on the mountains. Next term is application of atmospheric pressure. Is atmospheric pressure good or bad? First of all, the question is atmospheric pressure working on ourselves? क्या atmospheric pressure हमारे बॉडी पे भी काम करता है? The answer is yes. Atmospheric pressure works on almost everything which is present on the surface of the earth. सब पर लगता है, whether it is living or non-living. There are some applications of atmospheric pressure. Yes, there are some uses. First use is working of a syringe. You have noticed that in syringe, what do we do? Before taking the medicines into the syringe, we used to press it here. Why? To decrease the pressure. हम यहाँ पर प्रेस करते हैं पिस्टन को, और यहाँ का प्रेशर क्या कर देते हैं? बिल्कुल कम कर देते हैं. एंड द लिक्विड और द मेडिसिन इन द कंटेनर, इट्स प्रेशर इज हाई ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and the atmospheric pressure helps this liquid to go inside the syringe, and in this way atmospheric pressure helps the liquid medicine to go into the syringe, just because atmospheric pressure is high in the surrounding area and low in the syringe. In the same way, vacuum cleaner, this is a device which is used to clean the house. ओके, ये पेपर डिवाइस होता है जो कि क्लीनिंग के काम आता है. इसमें भी क्या होता है? व्हेन वी स्टार्ट द वैक्यूम क्लीनर, जब हम वैक्यूम क्लीनर को स्टार्ट करते हैं, इन द वैक्यूम क्लीनर एयर प्रेशर डिक्रीज वेरी हाई. यस, एयर प्रेशर जो होता है वैक्यूम क्लीनर का बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है. एंड वी नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एरिया विल बी हाई. इन द सेम वे द litters or the waste materials that will go inside the vacuum cleaner, because the vacuum cleaner's atmospheric pressure will be low and the atmospheric pressure of the surrounding area will be high. Third,
drinking from a straw. Straw means pipe. हम पाइप से क्या करते हैं, स्ट्रॉ को पीते हैं। देयर फर्स्टली व्हेन वी सक द एयर प्रेशर डिक्रीज। जैसे आप सक करते हैं फर्स्ट सम सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए क्या होगा ना, आपको लिक्विड नहीं मिलती है, उस सेकंड्स में जो पूरा प्रेशर है यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, इट विल हेल्प दिस लिक्विड टू गो थ्रू दिस पाइप एंड इन दिस वे वी कैन ड्रिंक इट। The same way रबर सकर, आपने मोबाइल स्टैंड के पीछे देखा होगा या फिर कार में भी एक स्टैंड आता है, मोबाइल लगाने के लिए, एंड देयर विल बी द प्लास्टिक एरिया हियर। हम क्या करते हैं, when we used to put it on the surface, जैसे हम सरफेस पर लगाने के लिए लेके आएंगे तो सरफेस के एयर प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप लगा देंगे वहां पे एयर प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, इट विल गेट डिक्रीज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्टिल द सेम हाई एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल अप्लाई फोर्स ऑन इट टू गेट स्टिक एयर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और ये हमेशा चिपका रहेगा। सो दिस आर द सम यूजेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समटाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डेंजरस if we are not conscious about our health। हाँ, अगर हमें अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है, that case it is dangerous also। when we move upward on the mountains, air pressure decrease। air pressure क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा और हमें उस एयर प्रेशर की आदत नहीं है। in that case our nose starts bleeding और हमारे मुंह से क्या होता है, खून आने लगता है। So we need to care about it। That's all, chapter is finished। On Sunday I will send the PDF work। Thank you।